सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक पार्सल है मेरे सामने और आप लोग देख सकते हो कि इसकी प्राइस है और ये एक स्टैंड है। ठीक है, इधर लिखा भी हुआ है कि रॉयल एनफील्ड करके। सो देखते हैं इसके अंदर क्या सीन है, तो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। तो एक क्रोम स्टैंड है। सो आप लोग जानते होंगे कि क्रोम स्टैंड कितना अच्छा लुक देता है गाड़ी को। सो इसीलिए मैंने ऑर्डर किया था। देखते हैं कि फ़िलहाल इसमें फ़ाइनल प्रोडक्ट क्या निकल आता है इसमें से। सो वैसे तो ये एक रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्ट है, इस पर लिखा भी हुआ है, ये देखो, हाँ, रॉयल एनफील्ड करके। ठीक है, और मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं कि ये हमारे किसी भी बाइक को फिट होगा या नहीं होगा, इंस्टॉल कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो जल्दी से इसको फटाक से खोलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा प्रोडक्ट है और क्या हमारी बाइक को इंस्टॉल होगा या नहीं। सो ये देख लो, ये बहुत ही हैवी प्रोडक्ट है और पूरा का पूरा क्रोम फिनिशेस है प्रोडक्ट में और हैवी भी है बहुत काफ़ी। सो ये गाइस आप लोग देख सकते हो कि ये सिमिलर है, प्रोडक्ट सेम है इसकी, और इसकी लेंथ भी देख लो, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको जल्दी से इंस्टॉल करके दिखाते हैं आप लोगों को ये कैसा रहेगा अपनी गाड़ी में। So strong now.
सो गाइस फाइनली मैंने अपनी 220 में ये स्टैंड इंस्टॉल कर लिया है। मैं पहले अपनी स्प्लेंडर में इंस्टॉल करना चाहता था, उसमें बोल्ट का कुछ इशू आ रहा था, वो बहुत जाम हो चुका था। एक्टिवा में भी मैंने वही ये किया, तो उसमें भी नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने इस पर इंस्टॉल कर दिया। अभी आप बताओ कि कैसा लुक आ रहा है। ये है पूरा क्रोम फिनिशेस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।